Hey sir, I mean it's been a dream year to be honest. Just last year, 2022, में right after the Commonwealth Games, I had a goal. I had decided that I want to compete in a completely different event, a new event, which was a decathlon. And at that point, same time, last year, I didn't really think about how it's all going to be. All I thought was कि करना है. And then same time last year, और उसके बाद अभी मैं एक साल बाद exactly अभी बैठा हुआ हूँ after breaking the national record in the decathlon, winning the Asian Championships bronze medal in the decathlon, winning the Asian Games silver medal in the decathlon event. So, I mean, it feels great, and it also feels like a dream season that's come to an end. I think the biggest high for me, अगर इस पूरे साल को sum up किया जाए तो biggest high तो definitely Asian Games ही होगा, और especially the performance that I was able to shell out at the Asian Games, and right before that deciding not to go to the World Championship so that I could focus on the Asian Games. तो वो decision भी कहीं ना कहीं बहुत important था, और वो करने के बाद एशियन गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड करना और एक मेडल लेके आना, वो शायद मेरे लिए सबसे बड़ी इस साल की हाईलाइट रही होगी, पर्सनली देखा जाए तो. I mean, naturally, as long as you're doing well, you don't have any problems or issues. जब कुछ issues होते हैं तो I think the best idea is to have them sorted as soon as we can. So I'm sure ये सवाल जो आपका ये Commonwealth Games को मन में रखते हुए आपने पूछा होगा, तो I think the best part was, in spite of everything that happened at the Commonwealth Games, right after that when I was able to bring a medal for the country, everything was sorted और उसके बाद कोई problem हुई नहीं, और आज तक मुझे अभी तक कोई problem नहीं होती है. तो I think the best part is, as long as everybody's on the same page at the end of it, that's what matters. And in the next season, which was the 2023 season, so problems तो मतलब ठीक है, नोक झोंक कभी कभी चलती रहती है, but as long as it nobody holds anything with them, or एक progress आगे बढ़ता रहता है and you're able to achieve your goals, the federation is able to achieve their goals, every athlete is able to do what they're supposed to do. I think there's no problem at all. ऐसे तो ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, ये तो आपने मेरे पे एक मिसाइल छोड़ा है, मुझे ऐसे ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड तो मुझे ऐसे आ नहीं रहा है, और ऊपर से अगर मुझे आएगा भी तो मैं उस सवाल का जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो मेरे को यहाँ से एक असली गोली लग जाएगी, तो इसलिए अभी मेरे को सोचना पड़ेगा. आई विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन. आई मीन, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, बट आई मीन एज अ spectator of the high jump and somebody who loves that event, I feel like Mutas Parshim from Qatar, he was poised to break the world record, and I still feel that he can do it. He's arguably the best that has ever done it. वो तो बात अलग है कि सोटोमेर जी का उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बट आई फील लाइक ऑल द अदर रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग दैट देयर इज टू विन इन द हाई जंप इवेंट हैज बीन won by Mutas Parshim, and he's definitely one of my role models. So I feel like he has a great chance of doing it even at this ripe age that he's at. Definitely, the switch from the high jump to the decathlon event has been a significant milestone in my career, and especially going back to the high jump. My plan is to go back to the high jump next year for the Paris Olympics. तो वो एक और एक सिग्निफिकेंट, आई मीन हर कंपटीशन और हर दिन मेरे लिए सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से एथलेटिक जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, कि अलग अलग चीज़ कर रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ है, तो एक सेट पैटर्न हमेशा मेरा शायद एक मोटो और मंत्रा भी यही रहा है कि भाई जो मोनोटनी है उसको ब्रेक करना है, ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स, ब्रेक द पैटर्न. तो आई फील लाइक आई हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली डू दैट विद द हाई जंप इवेंट. आई वाज नॉट सपोज्ड टू गो, देन एंडेड अप गोइंग, getting a medal, completely new event, decathlon. So I feel like that's been my mantra, and I've been true to myself. I've been able to express myself freely without ignoring the naysayers, and doing what I feel like is the right thing to do, and I've succeeded in it. So I feel like my biggest strength would be to continue doing what I do without any interference from anybody, and just use my own brain. Success or failure वो तो हमारे हाथ में नहीं है, but as long as I'm doing everything that I want to do, I'll not have any regrets when I am done. So that's my only thought process when I think about it. Yeah, that's definitely the plan. The idea is to get started. I've already started my preparations for the high jump event. और अभी तो क्वालिफाई करना भी बाकी है पेरिस ओलंपिक्स के लिए. So the idea is over the next 4 months, 5 months to get as many competitions that I can, and get to my prime physical shape for the high jump event. क्योंकि उसके लिए बॉडी ट्रांजिशन भी थोड़ा ज़रूरी है. कंबाइंड इवेंट्स की फिजिकलिटी थोड़ी अलग होती है
इंडिविजुअल इवेंट की, हाई जंप जैसे इवेंट की फिजिकलिटी थोड़ी अलग होती है. सो आई हैव टू गेट माई सेल्फ फिजिकली रेडी for the high jump, and then get as many competitions that I can, so that I'm able to jump competitively and make it to the Olympic Games in the high jump event. I mean, the reality is that I didn't choose that university. The university chose me. क्योंकि उस टाइम पे हुआ ये था कि initially I didn't know anything about it, and when at that time Neeraj Chopra's coach Gary Calvert, when I met him, he said that you've done your education, so why don't you try to go to the US. So then he helped me get into यूनिवर्सिटीज़. और जैसे ही पता लगा कि एक बच्चा जिसने 226 किया है 11th स्टैंडर्ड में वो आना चाहता है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे रीच आउट किया. And then I asked Gary Calvert कि सर बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, मुझे वो बताओ, आई वांट टू गो देयर. एंड ही सेड Kansas State University. And when we emailed them, they said sorry, we don't have a spot. So actually I didn't have a spot at the Kansas State University. But उसके बाद लास्ट में जब मैं कहीं और साइन करने वाला था, तब के स्टेट के जो कोच हैं अभी मेरे, क्लिफ रोल्टो, उनका मुझे मैसेज आया ये बोलते हुए कि वन ऑफ द एथलीट्स डिसाइडेड टू मूव ऑन एंड ही वेंट टू अनदर यूनिवर्सिटी, सो वी हैव अ स्पॉट ओपन अप, क्या आपको आना है. तो तब मैं कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी गया, वरना तो मैं भी शायद किसी और यूनिवर्सिटी में जाता. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. 6-7 years I spent there, and I learned a lot. I developed into the athlete that I am right now. तो बहुत सीखने को मिला. तो अगर वापस मुझे मौका मिलेगा ऐसे जाने का, तो आई फील लाइक आई डेफिनेटली डू इट. I mean, the reality is, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स का ही अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जब जिस फाइनल में मैं था उस कंपटीशन में, तो उसमें ब्रेंडन स्टार्क जो फर्स्ट आए थे और हेमिश कर जो सेकंड आए थे, उन दोनों को छोड़ के बाकी सारे किसी ना किसी टाइम पे अपने ज़माने में NCAA सर्किट में खेलते थे. सो दैट बीइंग सेड, एट द ओलंपिक गेम्स, एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, there's so many athletes, more than I feel like 60% of athletes have at some point been at NCAA college or the university. So the reality is, how these things function is, it's a big business where really good athletes from across the world are recruited, and they have the opportunity to compete with the best talent in America. तो दोनों का फ़ायदा होता है कि जो बेस्ट बच्चे बाहर के हैं उनको अमेरिकन बेस्ट किड्स के साथ compete करने का मौका मिलता है, और वाइस वर्सा. And ultimately, out of these people, it's weeded out, and the best of the best eventually, when they grow up, make it to the Olympic Games, make it to the World Championships, and those who don't, they just stay back. तो आपने पूछा कि इम्पैक्ट क्या है सिस्टम का. इसका इम्पैक्ट ये है कि फ्रॉम अ वेरी यंग एज यू आर एक्सपोज टू ग्रेट टैलेंट, एंड you know where you stand, because there's always somebody who's better than you, and you're able to see that person right in front of you. मुझे लगता था कि इंडिया में मैं सबसे बेस्ट हूँ ऐसे वैसे, और यहाँ पे जब मैं NCAA में आया, पहले साल में जीता. अब जब पहले साल जीते हो तो आपको नेचुरली यू थिंक कि द नेक्स्ट 4 years you're going to win, but then next year there's this guy from nowhere who popped up. His name was Juwan Harrison, and today we know that he's the only guy who's qualified after Jim Thorpe 100 years ago, जिसने हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों इवेंट में ओलंपिक्स में खेला था. एंड ही इज जंपिंग ओवर 236 in the high jump and jumps over 840 in the long jump, which is more than Mutaz Barshim in the high jump and Sri Shankar in our इंडियन लॉन्ग जंप. और उससे ज़्यादा वो लॉन्ग जंप करता है, और वो लॉन्ग जंप उसका इवेंट है ही नहीं है. सो ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे आपको मिलते हैं वहाँ पे जाके. सो यू आर जस्ट एक्सपोज टू द रियलिटी, एंड यू आर जस्ट शॉक्ड. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो opens up so many possibilities कि यार इसको मैं कैसे इससे बेहतर कर सकता हूँ. And then you get to meet all these people, you interact with these people, so you know the level of competition that's going to be at the Olympic Games literally 8 years 10 years before you even go to the Olympic Games. तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए वो मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है. और अगर आप में कैपेसिटी नहीं है तो आपको पता लग जाता है कि भाई मुझसे नहीं होगा, तो आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, किसी और चीज़ में जा सकते हैं, और आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो रही है, तो यू कैन गो दैट वे ऑल्सो. सो इट जस्ट opens up your eyes and weeds everything out for you. So it's a very good equalizer and a great opportunity. And the best part is it's at nobody's cost. So ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मेरा खर्चा दे रही है, या मेरी मम्मी मेरे को पढ़ाने के लिए NCAA सिस्टम में पैसा दे रही है. If you're good enough, they're going to pay for all your expenses. So I don't see why some of our best kids should go there, develop into great athletes, see where they stand for 4 years, and then come back and represent their country. I mean, I feel like, the reality is, at the Asian level or the Commonwealth level, world level, all the people that come there, that make it to that final of the World Championships, finals of the Commonwealth Games, वो सारे लोग उतने ही talented होते हैं मेरे हिसाब से, जितने सब more or less within, they're within hands striking distance of each other. सब बहुत बराबर होते हैं physically. So the only thing that sets apart the person who finished first or the person who finished eighth is how well they were able to handle the pressure of that given day, given moment. So I feel like you said,
फिजिकल स्ट्रेंथ सारी चीज़ें तो हैं, बट मेंटली हाउ वेल यू आर एबल टू हैंडल प्रेशर, हाउ वेल यू आर एबल टू हैंडल दैट हाई ऑक्टेन एनवायरनमेंट एंड डिलीवर योर बेस्ट ऑन दैट गिवन डे. एक दिन आगे पीछे हो गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू डू इट ऑन दैट डे. So those are things that really, matter, and it only comes from practice. But at the same time, you have to mentally condition yourself to be able to get used to that pressure. So the only way you can do it is compete in more competitions. And at the same time, जैसे आपने mental health coach की बात की, तो I feel like the most important job that psychologists or sports psychologists have is to get the athlete used to that pressure, and teach them how to handle that to the best of their ability, and still be able to execute and focus on whatever cues, goals they have, and still do the best they can do. So yes, I feel like there's a lot of scope for our athletes, especially in India, to learn from mental health professionals, और उनके साथ सीखना कि कैसे हम अपने मेंटल गेम को भी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. फिजिकली तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेंटली हम और कैसे बेहतर हो सकते हैं. It's like you said, I mean, we talked about mentality, so it's all a build up. जब भी कोई competition आता है, if there's something that you really want to do, if there's something that you really put your mind to, for me especially, it's very easy to channel myself, motivate myself, because जैसे अगर जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती है, वैसे मुझे सिर्फ वो गोल दिखता है. जब वो गोल करना होता है, तो there's nothing else that can distract me. It's really easy for me to motivate myself, because if I want something, I'm going to go after it no matter what. But if there's nothing that I need to achieve at that point, if it's beyond me, and I'm very realistic in these things, so I feel like if there's something that I can't do, I won't even budge. मेरे को सबसे बेस्ट मेरा पास टाइम है कि अपने सोफे में पड़े रहना और टीवी देखना. तो उससे अच्छी मेरी कोई पास टाइम है ही नहीं है. तो जब मुझे पता है कि अगर मेरे बस की कोई चीज़ नहीं है, तो वो मैं उस पर ट्राई ही नहीं करने वाला. और अगर मुझे पता है कि 1% भी मुझे कहीं पे चांस लगेगा, तो मैं उसके पीछे दोनों हाथ फैला के मैं उसके पीछे भागने वाला इंसान हूँ. तो आई नो वेरी क्लियरली व्हाट आई वांट, व्हाट आई डोंट वांट, व्हाट द थिंग्स दैट आई लाइक, द थिंग्स दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग. So that way it's really easy for me to motivate. Plus, this is my life, this is what I was born to do, so I don't see why I shouldn't be motivated. ऐसा तो नहीं है कि I'm good at something else, and ये ऐसी जर्नी है कि मुझे weight loss करना है लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. I mean, this is my life, this is what I do, this is my identity. So there's no question about motivating myself or finding the motivation for me. नहीं, अमिताभ बच्चन जी से तो मैं कंपेयर करने लायक नहीं हूँ, इतना बड़ा स्टार मैं नहीं बन पाया अभी तक, और उसके लिए बहुत टाइम है. बट मतलब अच्छा तो लगता ही है, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक आई एम ऑल्सो द माई बिगेस्ट क्रिटिक. तो सबसे ज़्यादा मुझे यही देख के लगता है कि अरे ये कैसी शक्ल बनाई थी उस समय. अगर मैं ऐसे कर लेता, मुंह को थोड़ा ऐसे लगा लेता, या ये कर लेता, हाथ थोड़ा ऊपर उठा लेता, तो शायद फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आती. तो वहाँ भी मेरा वो वाला दिमाग ज़्यादा चलता है. बट आई मीन इट्स ऑलवेज अ वेरी ग्रेट हम्बलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि as an athlete or as anybody, I feel uh, you want to be appreciated, you want to be known for your efforts, और सब चाहते हैं कि उनकी सराहना हो, उनको लोग जाने. और जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कोई पहचान लेता है एयरपोर्ट में, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि चलो हम जो कर रहे हैं इसका मतलब कोई तो अच्छी चीज़ की. एंड वी आर एबल टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, मेक आवर फैमिली members, everybody else proud, and they are able to recognize you for the right reasons. So I think that's the biggest goal and motivation that keeps me happy. अभी जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे, तो उसमें मुझे शीतल देवी बहुत ज़्यादा, मैं उनसे इम्प्रेस था कि कैसे वो जो आर्चरी करती हैं. सो आई फील लाइक इफ़ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, आई डेफिनेटली लव टू गो फॉर डिनर विथ हर. और मतलब आई एम एक्चुअली, ये मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा, बट आई वाज सो इम्प्रेस्ड वाचिंग हर डू द आर्चरी इवेंट, एंड आई वाज जस्ट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मैंने टीवी पे ही देखा, और अभी शायद दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हो रहे हैं, और सुनने में आया कि उसके लिए वो आएंगी. तो ज़रूर मैं जाके वो कॉम्पिटिशन लाइव में देखना चाहूँगा.